फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टेबलाइजिंग द इंडियन ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन। इसका आंसर है ए, एनहेंस मिलिट्री कैपेसिटी। सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर है बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, दी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसका आंसर है सी, नॉन अलाइनमेंट। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 एट। इसका आंसर है सी, पोखरण। Whether the following statements are true or false. फर्स्ट क्या है, पंडित नेहरू contributed towards improving Sino-Indian relations। तो इसका आंसर देखो, ये जो है, देखो ये क्या है, ये है ट्रू, तो आपको ये ट्रू लिखना है। ओके, इसमें क्या है, आपको सेल्फ ओपिनियन बेस्ड लिखना है, और फिर उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा, पंडित नेहरू फॉर्मुलेटेड पंचशील which were treaties of the 5 principles of peaceful coexistence to govern relations between India and China. The first formal codification in the form of a treaty was agreement between China and India in 1954. Second point है, mutual non-interference in internal affairs, mutual non-aggression, equality of mutual benefits, mutual aspects, and peaceful coexistence were the principle for seeking peace with China. Third point है, Nehru backed China's permanent membership in the United Nations Security Council. Fourth point है, though Nehru and policy of improving Sino-Indian relations, China attacked India in 1962. Okay? Second क्या है? Second है, अटल बिहारी वाजपेयी टुक लीड इन इम्प्रूविंग रिलेशंस विद पाकिस्तान। तो ये जो है, ये भी आपका ट्रू है, आपको ट्रू लिखना है, एंड आपको ट्रू लिखना है, फिर लिखना है इवेलुएटिव सेल्फ ओपिनियन बेस्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इन एन एफर्ट टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव स्टार्टेड अ बस सर्विस कॉल्ड सैयदे शरबत call of the border between Delhi and Lahore. When Atal Bihari Vajpayee is the prime minister, he also received a train called Samjhauta Express, Friendship Express. Second point है, Atal Bihari Vajpayee rendered help of the earthquake victims of Pakistan during the rule of Pervez Musharraf. And third point है, in 1999 there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. Fourth point है, Atal Bihari Vajpayee tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. Okay. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 90, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड वी स्टार्टेड शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली.
Second point is the directive principles of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. Point है Art 51 among the directive principles of state policy lay down the broad framework for foreign policy. And fourth point is according to it, India should give priority to safeguard international peace and security, to resolve our international problems and disputes by peaceful means. Objectives of our foreign policy should be to maintain friendly relations with other nations and respect international laws. Last point है India's foreign policy till now has been developed in this framework. Interest, ये फर्स्ट पॉइंट है. नेशनल इंटरेस्ट implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. Second point है national interest also includes effort to achieve our economic development and to take steps towards increasing our national power. Third point है when decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. First point, world peace is an ideal state of freedom, peace and happiness among and within all nations and people. This second point, this ideal of world non-violence provides a basis for peoples and nations to willingly cooperate. Third point, either voluntarily or by virtue of system or governance that prevents warfare. Fourth point, India has been consistently supporting efforts for disarmament because it is India's policy that there should be peace and security. तो यहाँ पे हमारे ये आंसर कंप्लीट हो गया है. फोर्थ क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द फैक्ट दैट वर्ल्ड पीस इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस? न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस लीड्स टू आर्म्स रेस. फिर क्या रहेगा? इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज टू वॉर्स. उसमें आपको पॉइंट 2 लिखना है. पहला रहेगा इफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ मेजर सिटी द ब्लास्ट सेंटर वुड बी हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन. Second point is survivors could have no electricity, no transportation, no phones, and hospitals would be overwhelmed if they were still standing.